Okay, so hi all, and this is the second part on the topic called The Bell by Irish Murdoch. Well, that's a novel, and in my first video, I have ended with the story that was being told by, Paul Greenfield to Dora Greenfield. Okay, so let's just continue the video from there. So basically, एक story थी that was being narrated by Paul Greenfield to her wife Dora Greenfield. Okay, and the story was about a bell. So next, what really happened? We meet two characters called Michael Mead and Toby Gesh. I have introduced them in the first video as well. So they spent a lot of time together. Toby Gesh is an 18-year-old boy. He have just finished his schooling, and वो अभी अभी इम्बो कोर्ट में आए हैं to spend his time. Okay, to spend his vacations. So both these characters spend so much time together, and what really happens? Michael once kisses Toby Gash. It make Toby, it just left him dumbstruck. वो बहुत ही ज़्यादा shocked हो जाता है that what had happened. ये अचानक से क्या हो गया? Okay, but later on Michael को realize होता है and he said sorry to Toby Gash. He apologizes later on. Now see, here we come to know that Michael is a homosexual. Okay, but he is somewhere suppressing, or you can say hiding, his own personality or his own trait or his own characteristics. Okay, now after some time we see that Toby Guest started spending so much of his time with Dora Greenfield, and he started liking Dora Greenfield, by the way. He started flirting with her, and in between their meetings, Toby Guest just told Dora that I found something like a bell in the lake. Okay, when I was swimming, जब मैं swim कर रहा था lake में, मुझे लगा that there was something like a bell. And Dora को तुरंत से click करता है that it might be the same bell. ये वो ओरिजिनल बेल है जो लेक में गिर गया था, that plunges into the water. And then an idea comes into her mind. वो टॉबी को कहती है that let's just swap the new bell for this old one. I have told you in the first video कि एक नए बेल को लाने की प्लान चल रही होती है, एक क्रिश्चियन सेरेमनी होने वाली होती है जिसमें कि नए बेल को उस टावर में लगाया जाएगा, टांगा जाएगा. So now what they are actually planning, Dora Greenfield and Toby Gash are planning कि let's just swap the new bell for this old one. हम इस बेल को जो है वो swap कर देते हैं. But what really happens on the day they have decided to do so, जिस दिन वो ये काम करने वाले होते हैं, उस दिन पॉल एंड डोरा की फाइट हो जाती है. दे ऑलवेज यूज टू फाइट बिकॉज उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, तो उन दोनों की फाइट हो जाती है. ऑन द अदर हैंड वी सी दैट टॉबी फील्स वेरी गिल्टी अबाउट सीक्रेटली स्वैपिंग द बेल्स. टॉबी को ऑन द अदर हैंड बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो क्यों इस प्लान में प्लान का पार्ट बन रहा है. एंड ही ऑल्सो हैड अ डिस्प्यूट विद ड्रंक एंड एंग्री निक. नाउ आई होप यू नो हु निक इज़. निक इज़ अ ट्रबल्ड कैरेक्टर इन द होल नॉवल. इस नॉवल में जितनी बुरी चीज़ें होती हैं, जितने प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो सिर्फ निक के वजह से होते हैं. यू लेटर ऑन रियलाइज, आई टेल यू दिस. ओके, एंड निक इज़ अ ब्रदर ऑफ कैथरीन. कैथरीन इज़ अ कैरेक्टर जो कि शी इज़ जस्ट प्रिपेयरिंग टू गेट एडमिटेड इन कॉन्वेंट. ओके, कैथरीन इज़ अ कैरेक्टर जो प्रिपेयर कर रही है कॉन्वेंट में एडमिशन, या यू कैन से कॉन्वेंट में जाने के लिए. एंड निक इज़ हिज ब्रदर, ही इज़ अ ड्रंकार्ड. नाउ सब लोग बेल को जस्ट ला रहे होते हैं, ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं, एंड अचानक से वो ब्रिज टूट जाती है. एंड जो बेल है, द सेकेंड बेल, और यू कैन से द न्यू बेल, it once again falls into the water. Okay, into the lake. कैथरीन ये देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड और शॉक हो जाती है. उसको लगता है दैट शी हैज़ कमिटेड अ सिन एंड दैट इज़ वाई इट हैड हैपेंड. बिकॉज आपने अर्लियर देखा था, राइट? एक नन को फीलिंग्स आ रहे थे फॉर समबडी, एंड दैट वाज अ सिन, एंड दैट इज़ वाई द बेल जस्ट फॉल इनटू द लेक. एंड कैथरीन को यहाँ क्या हो रहा है, लाइक कैथरीन इज ऑल्सो हैविंग अ फीलिंग फॉर माइकल मेड. ओके, वो सीक्रेटली माइकल मेड को पसंद करती है. एंड देन शी रियलाइजेज कि इट मे बी पॉसिबल बिकॉज आई एम कमिटिंग अ सिन, एंड इसलिए ये बेल वापस से इट जस्ट फेल इन टू द लेक. एंड शी फील्स वेरी गिल्टी, एंड वो लेक में कूद जाती है. शी जस्ट ट्राई टू ड्रोन हर सेल्फ इन टू द लेक. उनके पीछे डोरा ग्रीनफील्ड लेक में कूद जाती है टू सेव हर. एंड देन फाइनली बोथ ऑफ देम गेट सेव्ड बाय अ नन. Just so sorry, in between all these things I just forgot to
tell you a very important point. जब निक एंड टॉबी की आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं, तब निक ने बोला होता है टॉबी को कि आई हैव सीन यू, तुम डोरा से फ्लर्ट कर रहे थे एंड तुमने माइकल को भी किस किया है, सो जस्ट गो एंड कन्फेस इट टू जैम स्टेपरपेस. Now I have already told you Jam Tepperpace is a senior member of the community. Okay. And वो एक्चुअली ऐसा ही होता है. टॉबी जो है वो सारी चीज़ें कन्फेस करके जैम को वो चले जाते हैं ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करने. एंड दिस इज़ हाउ द नॉवेल्स एंड निक लास्ट में सुसाइड कर लेते हैं बिकॉज एवरीबडी फाइंड्स आउट दैट ही वाज द वन जिसने ब्रिज में प्रॉब्लम क्रिएट किया था एंड इट जस्ट ब्रेक डाउन एंड बेल जो है वो डूब गया. सो ही वॉज द वन हु डिड इट. इस एक्चुअली ये जानने के बाद माइकल उनसे मिलने भी जाते हैं, बट देन ही हैड कमिटेड सुसाइड. निक हैड कमिटेड सुसाइड. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एंड ऑफ द स्टोरी वेयर डोरा ग्रीनफील्ड शी जस्ट लेफ्ट हिज हस्बैंड बिहाइंड एंड वो वापस से चली जाती हैं एंड वो अपनी स्टडीज़ को परस्यू करती हैं एंड शी प्लान्स टू टीच आर्ट इन लंडन. ओके. एंड वो चली जाती है. वी सी माइकल who was kind of suppressing his own desires and feelings about and his sexuality, but then later on he just moved to London and वो भी इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के लंदन में चले जाते हैं. कैथरीन who had committed suicide, who was trying to commit suicide, वो भी लंदन चली जाती हैं to seek therapy, to take a therapy. And this is how the novel ends. Thank you.